This is the Bir district in the Marathwad region, traditionally known as the cotton-growing belt of Maharashtra. But in the last decade, it has acquired a more fatalistic reputation as the hotbed for farmer suicides in India. Climate change has adversely impacted the livelihood of thousands of farmers in this region, making it more vulnerable to drought and erratic rainfall. The anomalies of this climate shift have severely affected the yield of cotton, a seasonal cash crop that relies heavily on timely rainfall. What was once considered a bumper crop for farmers here has now become a financial burden on them. We are in a village called Rui, once a thriving hub for cotton farming and one that has earned its name from the crop. For nearly 20 years, Shivaji Rao Patil and his family depended on growing cotton. It was their primary source of income, but instead of earning from it, he ended up taking more loans to stave off the dire consequences of a poor harvest. Decades of intensive cotton farming had also degraded soil health. आम्हाला कापसाच्या कष्ट म्हणजे प्रत्येक वेळेस त्याला फवारणी मारायची, त्याला त्याच्या अगोदर खत द्यायचं, परेशान होत होतो आम्ही. उत्पन्न तर काय प्रॉफिट शिल्लकच राहत नव्हतं काही. नुसता खर्च करा. 2018 दुष्काळ पडला. त्या दुष्काळात कापसाचं पिकच आलं नाही. पूर्णपणे शेती समजा पूर्ण नुकसानीत झाली. In the midst of this looming crisis, 38-year-old Kalidas Nawale was elected as the Sarpanch of Rui. तो मेरे गांव का नाम ही रुई इसलिए पड़ा कि कपास पे सबसे ज़्यादा काम करने वाला गांव मेरा था. कपास की बिजाई हो या कपास का उत्पाद हो या कपास पे काम करना हो. लेकिन उस टाइम तो ऐसी परिस्थिति थी, एक तो कॉटन का लागत थी खेतों में, और बारिश जिस टाइम कॉटन को माल लगना है या उसको बॉयल आना है उसी टाइम बारिश कम हो जाती थी. तो उत्पाद का साधन एकदम कम हो जाता था. तो मजदूरी करना या गन्ना तोड़ने के लिए किसी और डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर जाना या हमारा महाराष्ट्र छोड़ के कर्नाटक की तरफ जाना, इतने मसले लोगों के सामने थे. बहुत परेशानी थी सब. कितने सारे लड़के थे जो पढ़ नहीं पाए, जिनकी पढ़ने की तमन्ना थी. मैं बोल रहा हूँ आपको, जो आपके सामने आज सरपंच बोल के बात कर रहा है, ये लड़का सिर्फ 12वीं पढ़ा हूँ और 12वीं के बाद मुझे हमाली करना पड़ा है. मैंने कम से कम 3 साल फिर फेडरेशन में या गाड़ी भरने का, कपास भरने का काम मैंने किया है. तो ऐसी मेरे जैसी सब पे हालत आए वाली. In 2017, Kalidas heard about an alternative cash crop that could be the solution to their problems, and that was silk. He found out how sericulture could be done with minimal drip irrigation and had a better harvesting cycle than cotton. In India, sericulture is also financially supported under the government scheme called Manrega, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Launched in 2006, Manrega helps distressed rural communities in India with a stable income. Under its purview, farmers get nearly 85% of the investment needed to set up a silkworm rearing unit. Kalidas decided to take the gamble. तो ये चालू करने के 2 मकसद थे. एक, फार्मर की आर्थिक उन्नति करनी है, इसमें पैसा है. दूसरा, यही पिक चुनना क्यों है, इसको मार्केट में बहुत मांगनी है, जो बोलते हैं डिमांड है मार्केट में. और दूसरी बात, इसको कम पानी लगता है. What started out as an agricultural experiment has now transformed into a large-scale silk farming community. Today, nearly 600 farmers from Rui have moved to sericulture. One of them is Shivaji Rao Patil. Within the first 3 harvests of the silk cocoon, he earned more than he had ever with cotton farming. आम्हाला पहिलं कापसामध्ये जेवढा खर्च होता तेवढाच खर्च निघत होता. शिल्लक काहीच नव्हतं. आता 12 लाख रुपये रेशीमची. महिन्याला किती मिळतं? महिन्याला 1 लाख रुपये. जब 1 लॉट निकाला, 2 लाख अंडी पूंज लिया, 2 लाख आड़ी का 2 क्विंटल माल निकला, और जब 2 क्विंटल के उसको 1,20,000 आए तो वो परेशान हो गया. क्योंकि जिस तेरे उसकी 10 एकड़ खेती से 1,20,000 नहीं मिलते थे, उसको 2 एकड़ के रेशम के 1 लॉट से 1,20,000 मिल गए. तो फिर वो स्टार्ट हो गया. The sericulture model at Rui today is an economic success and one many other villages are trying to emulate. To understand the longer ecological benefits, however, we caught up with Seema Hardikar,
a permaculturist working closely with farmers in the state. Seema explains how replacing cotton with a perennial crop like mulberry can be a viable option for drought-prone regions. Mulberry is a kind of very well sprayed and hardy species. It's a tree species. Okay, so directly if there is a difference, so you are moving from a seasonal crop to a perennial crop. One very good attribute of mulberry species, if you ask me, is basically it responds well to, as I said, copicing. Okay, the growth rate is very high. If you just go on training the crop, cutting the branches, the new flushes will come and it will go on. So first is growth rate is very high. Because of that, a lot of carbon is sequestrated. In cotton, you have to use a lot of pesticides. In sericulture, there is a limitation because you are already growing an insect larvae. Okay, and whatever you are using, your larvae is going to be very sensitive to the insecticides. So I guess in sericulture you can't use pesticides at all in your mulberry plantations. So that is an advantage because your soil and water is saved, it is out of the danger. And then in rearing the shades of where the silkworms are reared, I guess a few disinfectants and things are used, but not directly pesticides, because again the insect is sensitive. The farming community of Rui tells us that their mulberry plantations are 100% organic. There is one common hatching center for the village. Once hatched, the larvae are distributed in trays of 1 lakh each to farmers who then move them to their own sheds. For approximately 20 days, these silkworms are fed mulberry leaves 2 to 3 times a day. The more mulberry leaves they eat, the better the quality of silk produced by them. At the end of the feeding cycle, the silkworms spin a protective cocoon around them for hibernation. This cocoon is made of one single thread of silk. After 4 to 5 days of making the cocoon, they are collected from the shed and sold at silk markets by weight. A lot of women in Rui have become active stakeholders in the process today. थोडा म्हणजे ब्लाऊज वगैरे शिवत होते मी. आता शेती करत नव्हते. हे रेशीम उद्योग आल्यापासून शेती करायला सुरू केली. म्हणजे अगोदर शेतातलं काही येत नव्हतं. आता हे रेशीम उद्योगपासून शेती करायला सुरू केली. ह्याच्यातून जास्त फायदा व्हायला लागला म्हणून. आपल्याला स्वतःला करायचाच उद्योग आहे. म्हणजे कोणी घरचे माणूस वगैरे नसले, असे गडी माणसं नसले तरी बी म्हणजे बायकांना करायसारखंच आहे. त्याच्यातून आत्मविश्वास येतोच ना. तर भरपूर सगळ्यांनाच आलाय. म्हणजे आमचं गाव असं एकदम चांगलं म्हणजे ह्याच्यात परफेक्ट झाले. रेशीम उद्योगातून म्हणजे बाहेर मंजुरीला जावं लागत नाही. हे स्वतः आपण आपल्याकडे दुसरे मंजूर आम्हाला बाहेरून आम्हाला स्वतः लावावं लागायला लागलेत. म्हणजे आम्ही तर दुसऱ्याकडे जातच नाहीत, पण दुसरीकडून आम्हाला आणावं लागते. There are, however, a few dark sides to silk production, those that have been drawing criticism globally. This centuries-old industry has been notorious in exploiting young children as labor to pay off their parents' debt. Reports suggest that despite being declared illegal in 1976, India hasn't been able to do away with bonded labor completely yet. Kalidas assures us that no children are part of the silk ecosystem at Rui. Moreover, the economic benefits of the village, if anything, belie the exploitation that has been associated with the industry. The other concern is the cruel practice of either boiling or heating cocoons, thereby killing the silkworm inside it. The intention is to be able to extract that single roll of thread without any breakage, which tends to happen when the moth breaks free naturally. Locals at Rui admit that the practice is still rampant in factories. Living in a water-stressed region means the fears around scarcity never really cease. Even for a perennial plant like mulberry, drip irrigation is a must, a need that is being currently met through the supply of groundwater. In the hope of building a reservoir for rainwater, Kalidas and his team have constructed several farm ponds and widened the river close to the village, building catchment areas around it. So how are you filling your farm ponds is very important.
So farmers are filling the farm pond or just using them as a storage to pump the groundwater and store into a farm pond and then use it for irrigation. It is not at all recommended, because your groundwater is safe, which is in the earth underground, and it is safe from the sun, because there is a lot of evaporation if you are extracting the groundwater and bringing it to the surface and storing in a pond, and which is open. And Marathwada is it is dry and hot during summer, and there will be like evaporation losses are like 40-50%. So it is not at all recommended. But if you are filling your pond by giving some catchment and diverting the rainwater, whatever rain you are getting during the season, to the pond, it is good. It is a good practice. As a village head and aware of these challenges, Kalidas tells us he is working with ecologists and government officials to make sericulture sustainable. Today, Ruiz farmers are part of a government program where they train and support other cotton farmers to replicate the model. उत्पाद निकाला तो इसको बेचने को हमको बेंगलोर जाना पड़ता, जहाँ रामनगर बोल के है, वहाँ मार्केट है, अपना इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ से बेंगलोर जाना, फिर ट्रांसपोर्टिंग खर्च, जाना आना। तो एक साल ये किया, जब क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ गया मेरा, तो फिर वहाँ के व्यापारी को हमने बोला कि हमारा क्वालिटी अच्छा है, तो आप आ सकते हो तो यहाँ से खरीदो, हमारी परेशानी कम हो जाएगी। तो वहाँ के नए नए व्यापारी को मिले, हम वहाँ जाके उनको यहाँ पे बुलाए। तो आज का कंडीशन ऐसा है कि बेंगलोर का व्यापारी यहाँ आके मेरा माल खरीदता है और यहाँ से वहाँ ले जाता है, इसलिए फार्मर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कम से कम ये 4 महीने का हमने एवरेज निकाला था, तो मंथली 3 करोड़ रुपए रेशम से गांव में आते थे। हर मंथ को 3 करोड़ रुपए खाली रेशम से गांव में आए हैं पिछले साल। Rui's sericulture model has received a lot of support from the rural administration as well. सेरिकल्चर का ॲक्च्युली होता क्या आहे, मतलब काय होतं, जो लाभार्थी आहे, सेरिकल्चर असेल किंवा कुठलंही मोठी इन्व्हेस्टमेंट, कुठलंही नवीन क्रॉप घ्यायचं असेल, तर त्याला एक जे प्रिन्सिपल किंवा भांडवली गुंतवणुकीची सपोर्टची आवश्यकता असते। बऱ्याचदा बँका त्याला कर्ज देत नाहीत, आणि मग अशा वेळेस शासनाची जी केंद्र शासनाच्या किंवा राज्य शासनाच्या योजनांची खूप मदत होते। या गावाला प्रामुख्याने पोकरा प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट ॲग्रिकल्चर रिसिलेंट, म्हणजे मतलब काय होतं की येणारा जो कालावधी, हवामान जो बदल झालेला आहे, याला सस्टेनेबल टिकाऊ अशा स्वरूपाचा हा प्रोजेक्ट आहे। गांव में मेरे कम से कम 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपए के फार्मर के घर है, बंगले हैं जो फार्मर के। कितने तो भी फार्मर है मेरे गांव में, कम से कम आज मेरे हिसाब से 20-25 लोग ऐसे हैं कि जिनके वो बंगले के सामने 10-10, 12-12, 15-15 लाख की 4 व्हीलर खड़ी है। ये सब जो हुआ है ये सिर्फ रेशम की वजह से हुआ है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने ये काम किया था, मैं जिस चीज़ के लिए काम किया था, वो काम था फार्मर का सुसाइड नहीं। आप डॉक्यूमेंटली देख लीजिए, 5 साल में मेरे गांव में एक भी फार्मर का सुसाइड नहीं। मैं ये जीत गया हूँ, यही मेरी जीत है। पैसा तो आता जाता लगेगा, लेकिन फार्मर अभी सुसाइड का सोचता नहीं है ना, ये सबसे बड़ी मेरे लिए वो बात है। Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.